करते हैं वेट। See, first I will just take 5 minutes to explain that the new batch जो 12th of June से है. In that batch we'll be starting basically with the macro section and एक्चुअली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैचेस हैं उसमें एक 27th ऑफ मई एंड students are joining in the same batch from today also. Now in this part we have done only one section, that is micro market structure, and here we are starting with the macro. Micro market structure has in fact 11 lecture. Those who are joining from today 12th of June, उनके पास दो ऑप्शन है. वन, दे कैन सी द रिकॉर्डेड ऑफ दिस 27th में बैच, और सेकंड लाइव के लिए 1st ऑफ जुलाई से जब बैच स्टार्ट होगा इन दैट बैच, बट टाइमिंग विल बी दैट 2:30. तो इट विल अगेन स्टार्ट विथ माइक्रो मार्केट. जैसे ये मॉर्निंग वाला बैच चल रहा है वैसे 2:30 वाला बैच भी बिगिन होगा. So 2:30 batch will be from 1st of July, and again in the same batch from I think 22nd of July we will start with macro. तो जो मैक्रो की क्लास अभी हो रही है वो सेम क्लास इनफैक्ट 2:30 वाले बैच में 22nd जुलाई से होगी, और माइक्रो की क्लास जो माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर की है सेम क्लास विल बी रिपीटेड इन 1st July, बट टाइमिंग फॉर दीज टू बैच विल बी सेकेंड हाफ, इट इज 2:30. ठीक है, तो ये मॉर्निंग वाला बैच रहेगा और ये सेकेंड हाफ का बैच. Now second thing is when we start with the macroeconomics, generally the class which begins, ये यहाँ तक clear है? Generally the class which begins, it begins basically with the common part of the economics optional, then Indian Economic Service as well as RBI. So first we cover the common aspect, then we differentiate. That means what is specific for economic service, what is specific for the RBI, and so on. What we are doing basically, we are taking this the common part of macroeconomics right now. So macroeconomics in IAS syllabus, it is part of paper 1. Paper 1, as you know, it has 5 subunits: advanced micro, advanced macro, money banking and finance, international economics, and growth and development. This macro is a part of Indian Economic Service in General Economics 2 paper. General Economics 2 paper के अंदर in fact there are 8 subtopics: economic thought, national income accounting, financial market, theory of employment, output and inflation, which is basically macro, growth and development, international economics, balance of payment, global institutions. So those are the topics for G2. So out of those 8 topics, we are starting with the macro part. And in the RBI, also the content RBI के अंदर, it is in fact the same thing that is written in the economic service, theory of employment, output. You can just see the format. ठीक है, ऑप्शनल के अंदर what we are doing is this section, advanced macroeconomics. अब advanced macroeconomics, what is written in the syllabus is a classical and Keynesian, neoclassical synthesis, neoclassical theory of interest rate determination and interest rate structure. So this is basically that part of syllabus which is mentioned. There is always some unwritten part of the syllabus. What is unwritten part of syllabus here? Macro में unwritten part यहाँ पे क्या, what is not written but they are asking regularly question from: inflation, unemployment, Phillips curve, Okun's law, design of monetary policy, inflation targeting, interest rate targeting. So there are various questions जो syllabus में directly mention नहीं हो रहे हैं, but it will be, so we have to interpret syllabus from past year question. So past year का question basically segregated है, from that past year question we have to interpret.
So this is one part. Then in the topic wise a question यहाँ separated होगा. So for macroeconomics part, now when you see the macroeconomic section, just determine what is the weightage of this section. So in 2024, one question was discuss critically the phenomenon of classical dichotomy. We will explain that question itself in the first class. So one question, major assumptions behind neoclassical loanable fund theory of interest. Third question, 4 question, one numerical was there. So recently, last 3-4 years they have started asking one numerical from the macro also, but that is the most easy numerical you will get. ISLM का numerical अगर आ जाए, it will be always preferred because उसमें कोई complexity है ही नहीं, ना ही कोई core mathematical concept involve होता है. So in fact 4 parts means about 40 to 50 marks का content होगा at least. 4 parts here. Then in 2023 again you find 1 question, 2 question, 3 question, 4 question, 5 question. So 4 or 5 parts हमेशा है. ठीक है, always 4 to 5 parts will be getting from the macro section. This is for optional. And when you see the question for economic service में मैंने कहा it is written as, it is part of GE2 and their syllabus is written as theory of employment, output, inflation, money and finance. That is broadly your macroeconomics. So again you find 1, 2, 3, 4. On an average 3 to 4 question, either it is in the economic service or it is in the civil service. दोनों में ये पूछे जा रहे हैं. RBI के क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते, सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, विल शेयर इट लेटर ऑन. एग्जैक्ट क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होता, बट कंटेंट के फॉर्मेट में इफ यू सी इट इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, सिलेबस में कहाँ पे ये मेंशन्ड है. तो इकोनॉमिक सर्विस में इट इज पार्ट ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स 2, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, output, inflation, money and finance. So we are basically starting with this part. And if it is for RBI में in second topic is macroeconomics, theory of employment, output, inflation. Actually RBI ने जो syllabus 2023 onwards दे रखा है, they have just copied the syllabus of Indian economic service. तो वो words भी आपको similar मिल जाएंगे. इकोनॉमिक सर्विस में भी माइक्रो सेक्शन में इट इज रिटन एज कंज्यूमर डिमांड, प्रोडक्शन, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर. हियर इट इज आल्सो सेम थिंग. क्लियर? वी आर स्टार्टिंग बेसिकली विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स. रेफरेंस के लिए दोनों ही क्वेश्चन देखना है. यू हैव टू इंटरप्रेट द सिलेबस. अगेन आई रिपीट बाय गोइंग थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चन. पास्ट ईयर क्वेश्चन से रेफर करना है. ठीक है. सो So if you are maintaining a separate spiral, तो separate content के फॉर्मेट में लिखेंगे for micro, for macro. So first start with, again I think we will not complete the entire macro in one go. We will take it in 2 different parts. So in the first part of macro, we will mainly limit ourselves to classical and Keynesian. Classical or Keynesian. Keynesian means actually ISLM topic. This classical itself will be taking about 3 lecture, ISLM I think 7 to 8 lecture. So in total about 11-12 lecture for the classical and Keynesian part. Then we will return to the micro part and then again return to the macro for the remaining part like inflation, unemployment. So those topic will be again taken. So macro will be done in 2 different parts. We are starting with the first part. Clear? So start with the content part now. Advanced macro, or you can simply write macroeconomics. First just understand the basic point. In macroeconomics we are studying with the aggregate. So whenever you use the term income, it is not income of a person, it is income of economy. Whenever we talk about the price, it is not price of a single product, it is price level, that is price index. So macroeconomics deals with aggregate.
aggregate, that is for the economy as a whole. So this approach of macroeconomics is broadly divided into two different parts, based upon two different set of principles. One set of principles followed by the old economists, collectively called as classical economists. So classical economists follow certain set of principles, I can say. They have made their own assumption to explain the economy. The alternate set of assumption was made by Keynes and their follower known as Keynesian economics. So they follow certain set of principle. They have made their own assumption to explain the same economy. We are explaining the same economy from two different perspectives. One perspective taken by classical, other perspective taken by Keynesian. और अभी ये माइंड में बिल्कुल नहीं लाना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. In fact, both are correct, but their way of explaining the economy is different. Their perspective is different. One is explaining the economy from short run point of view, other is explaining the same economy from long run point of view. So their perspective is different. So just try to understand what was the classical view, what was the set of assumptions or principles they followed, what are the set of assumptions that Keynesian will follow. आज की डेट में जो इकोनॉमिस्ट हैं, some follow the classical, but they have modified it. They are broadly following the classical, but they have modified the classical. They will be known as the neoclassical or post-classical. Some follow Keynesian argument, but they have modified the Keynesian argument. Broadly agree with the Keynes, but they have modified the Keynesian argument also. They will be known as post-Keynesian or neo-Keynesian. So we will talk about neoclassical or neo-Keynesian later on. First we have to understand classical. Second thing, ये जितने भी कंसेप्ट होते हैं ये सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है. क्लासिकल इकोनॉमिक्स डोमिनेटेड बिफोर ग्रेट डिप्रेशन. तो 1929 से पहले की इकोनॉमिक्स, पहले के जो इकोनॉमिक थॉट होते थे, they were collectively basically the classical. Obviously there will be some drawback of that description which was pointed out by Keynes during Great Depression. So Keynes provided the alternate set of description. Therefore the followers of Keynes followed basically Keynesian assumption. So that Keynesian economics basically we can say dominated till 1960s. 1960s में जो recent economists थे, they started modifying the concept, like फ्रीडमैन का concept हो गया, monetarist है, they started modifying the argument given by Keynes. Some modified the argument given by the classical. So basically it is a debate. So classical countered by Keynes. Then some later on classical they defended themselves. And how they can defend themselves? They will modify their argument. Okay, I mean this when I explain this part. Then again that argument will be countered by the Keynesian. They will become the post-Keynesian. So it is an ongoing debate. Okay, this is an ongoing debate. The debate still continues. There could be some synthesis of classical and Keynesian also. So we start basically from classical, then we go to Keynesian, then we go to neoclassical, then again we go to neo-Keynesian. So ये different point of time भी है, याद रखिएगा. When we are studying the classical, at that point of time Keynesian argument was not available. That argument was not there. That argument came later on. We are studying later on. So first, in the first topic I will just broadly make a difference between classical and Keynesian. And this was question I think in 2023 also. In the, let's see this, the question. Question number 11. Explain the major difference between classical and Keynesian macroeconomics. So effectively the first topic itself will be answering this question. Major differences between classical and Keynesian. So we have to understand what are the major differences. Then we will elaborate classical model, then we will elaborate the Keynesian model. But firstly, what are the major differences between classical and Keynesian model? ठीक है, यहाँ से begin कर सकते हैं. Classical and Keynesian. ठीक है, फर्स्ट शॉर्ट पॉइंट्स में आप इसे फॉर्मेट में लिख लो टेबुलर, देन आई विल डिक्टेट इन अ पैराग्राफ.
When you are answering the question, it should not be in the tabular format, rather it will be a short paragraph for each point. So classical economists basically followed certain set of assumptions. The main important argument of classical model, is that there is always full employment in labor market. Classical believed in full employment. There is always full employment in labor market. Now question is, what is the meaning of the term full employment? Full employment does not mean that everyone is employed. Full employment only means that demand and supply of labor is equal. There is equality of demand and supply. So if I denote employment by N, so demand for labor and supply of labor are equal. तो उनके इक्वालिटी से जो एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होगा उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे. That means those who are willing to work at the current wage rate, they are able to get job. Those who are not willing means they are voluntarily unemployed. So there could be voluntary unemployment, there could be frictional unemployment. Frictional means person has left one job searching for the other job. In between the person is unemployed. So voluntary और frictional तो रहेगा, but involuntary नहीं होगा. Those who are willing to work at the market wage rate, they are employed because demand is equal to supply. But why demand is always equal to supply and how it is guaranteed? It is guaranteed mainly because of wage flexibility. That is second assumption. Labor market is characterized by full employment, and full employment is guaranteed by flexibility of wage. Flexibility of wage means there is no restriction on wage changes. Like for example, if demand for labor is more than supply of labor, so due to more demand for labor, wage will increase. And whenever there will be more supply of labor as compared to demand, then wage will fall. Wage will continue to change so that demand becomes equal to supply. So full employment is the basic assumption of classical model. Full employment is ensured due to flexibility of wage. Full employment is guaranteed by flexibility of wage. Keynesian argument differs. Keynesian argument say that economy is generally characterized by unemployment. That means we do not observe full employment. Economy is characterized by unemployment. But natural question is, if there is unemployment actually means that supply of labor is more as compared to demand for labor. Only then there will be unemployment. Supply of labor is more. So if supply of labor is more as compared to demand for labor, then there is unemployment. Classical model कह रहा है कि if supply will be more, then wage will fall, and due to flexibility of wage, full employment guaranteed हो जाएगा. Keynes कहता है कि wages rigid होते हैं, wages are not flexible. Even if supply of labor is more, wages cannot fall because wages are set by government also. There is a minimum wage law. Wage cannot fall below that. Wages are also set by the union. Union will not allow wages to fall below that. So there are certain reasons which make wages rigid. Wages are also set by the contract. पर्सन ने एम्प्लॉय कर रखा, फर्म को ज्वाइन कर रखा, तो एक वेज कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड में वेज को चेंज नहीं कर सकते. तो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ वेज. देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ वेज. केनिशियन मॉडल में वेज रिजिड है, क्लासिकल मॉडल में वेज फ्लेक्सिबल है. assumption की बात, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट set of principles on which classical model is based. One difference is clear. Classical says full employment due to flexibility of wage. Keynesian says unemployment due to rigidity of wage. This table will continue. There are various differences. When we go for the classical,
In classical model, we say that output, whenever I will write Y, capital Y, read it GDP or aggregate output. In classical model, output is a function of capital, labor, technology, and so on. We write production function like this: Y as a function of capital, labor, technology, and so on. But when we study Keynesian model, in Keynesian model, Y will be determined by aggregate demand. Y will be equal to AD. Or aggregate demand includes consumption demand by household, investment demand by firm, गवर्नमेंट डिमांड और ओपन इकोनॉमी होगी तो नेट एक्सपोर्ट भी ऐड कर लेंगे उसमें. तो वी राइट y इज इक्वल टू दिस. इन क्लासिकल मॉडल output determined by capital labor, in Keynesian model output determined by demand. Clear? Now just for example, if I ask a question, why GDP of India in 2024-25 is more as compared to what it was in 1951? Why GDP of current year is more as compared to GDP of 1951? What could be the reason why GDP has increased? You will simply say that we are able to produce more GDP means we are able to produce more output. But we are able to produce more of output over a period of time mainly because we have more plant and machinery. We have better technology. Labor is becoming more efficient and there is more labor also. Labor force has also increased because of population. So output is more mainly because we have more plant and machinery, we have more labor, we have better technology. But if I say that the GDP growth rate of 2024-25 is less as compared to the growth rate of 2023-24, so why GDP growth rate has declined? What could be the reason for decline in the growth rate of GDP? What could be the reason for slowdown of the economy? Growth rate has declined as compared to last year. But what could be the reason? You can say the reason, obviously over a period of time, that is in 1 year, the stock of capital has not declined, labor has not declined, technology has not depreciated. So what could be the reason? You can say there is lack of demand in the economy. Because of lack of demand, plant is producing less output. Because of less output, GDP growth rate is lower. So now identify. When you compare 2024-25 with 1951, basically you are taking long run view. So in the long run, we focused on capital, labor. So classical model is long run description of economy. Classical model is long run. When we compare 24-25 with 23-24, we focus on demand side factors. Due to lower demand, is lower production. So we emphasize on Keynesian model. So Keynesian model is short run description of economy. It focuses on demand more. Demand has a role to play in determining the output. Classical model is a long run description of economy where demand do not have a role to play in determining the output. ठीक है, वो सारे description में भी लिखेंगे. We'll write all. So one important difference between classical and Keynesian is it is long run description of economy and Keynesian is short run description of economy. Both are explaining the same economy. One is taking the long run view, other is taking the short run view. What will happen in the long run, what will happen in the short run. So generally you will find all classical argument correct in long run. And usually you will find all Keynesian argument correct in short run. Short run में Keynes जो कह रहा है वो सही है, long run में जो classical कह रहे हैं वो सही है. We are explaining or understanding the economy from both point of view. What will be the short run consequence? What will be the long run consequence? So this is another important difference between classical and Keynesian. One is short run, other is long run description. Now, when we proceed further, then classical model, it says that it is basically based on the assumption of Say's law.
which states that supply creates its own demand. Say's law say that supply creates its own demand. Supply creates its own demand. Just understand what is the meaning of this statement. Classical model is based on the assumption of Say's law. J.B. Shaw is a classical economist. Say's law says that supply creates its own demand. So what is the meaning of this? How supply can create its own demand? Just try to understand what is the meaning of this statement. If you supply a product, demand for that product is generated automatically. That is the argument. Supplying means production. Once you produce and supply a product. So Say's law basically say that if you supply a product, that means if you produce a product, so suppose any particular good has been produced, good X has been produced. Now question is how to produce a commodity. किसी भी गुड को अगर प्रोड्यूस किया होगा तो कैसे प्रोड्यूस किया हमने? By using labor, land, capital, entrepreneur. So there must be use of factors of production. To those factors of production you must pay factor payment. For the factor services they will receive the factor payment. Factor payment like to labor you will pay wage, to land you will pay rent, to capital you will pay interest, entrepreneur will take the profit. So production generates income. Income for whom? Income for the factors of production. So production generates income. And what is the use of that income? To spend it. Spend it on what? Spend it on the good that has been produced. So if you produce a commodity, production will generate income. Income will create expenditure. So in that sense, supply creates its own demand. Supply creates its own demand in that sense. Now, if we agree with that statement that supply creates its own demand, how we can explain depression? Great Depression 1929 से 1939 तक रही है, 10 year. तो डिप्रेशन के पीरियड में क्या होता है? इज इट लैक ऑफ डिमांड और लैक ऑफ सप्लाई? लैक ऑफ डिमांड है वो. दैट मीन्स देयर वाज प्रोडक्शन बट देयर वाज लैक ऑफ डिमांड. दैट मीन्स सप्लाई वाज नॉट क्रिएटिंग इट्स ओन डिमांड. There is something fundamentally wrong with this description. That was explained by Keynes. Keynes identified or pointed out the flaws in this argument. What is the flaw in that argument? But when you study the Say's law, it says the supply creates its own demand. So it says production generates income, income will be spent, and that spending will create demand for that commodity. But Keynes do not agree with that. Actually, Keynes says that supply does not create its own demand. So Keynes provided the alternate description of it. Keynes do not agree with Say's law. The reason for Say's law is that जब आप उसको further elaborate करेंगे over a period, that classical model actually believed that money perform only one role, and that role is to act as medium of exchange. So according to classical, money perform the role of medium of exchange, and therefore money is demanded only for transaction purpose. That means we keep money only because money helps us to buy goods. We are holding money for that purpose only. So if I get money, I am using that money for transaction purpose. I will spend it on the goods. So money is held only for transaction purpose because money act only as medium of exchange. केन्स ये नहीं कह रहा है कि क्लासिकल गलत कह रहे हैं. केन्स is simply saying that क्लासिकल जो डिस्क्रिप्शन है वो इनकम्प्लीट है. Keynes agree with the concept of classical that money act as medium of exchange, but उसने ऐड किया money also act as store of value. Money also act as store of value. That means money is demanded not only for simply transaction purpose, but it is also demanded for speculative purpose. So that speculative demand for money concept is
attributed to Keynesian argument. Money is demanded for transaction purpose as well as money is demanded for speculative purpose. What is the speculative purpose of holding money? What is speculation here? Speculation, like for example, suppose you can relate, well, we have to explain it in terms of the bond, but you can relate with the share market. If you are anticipating that the share market will go down, so if you are anticipating that share market will go down, then naturally you will sell the share. When you sell the share, what you will get? Money. And once the value of that share will go down, again you can buy that when the value will go down. Important question is, जब शेयर का प्राइस चेंज हो रहा था, उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, तो हमने अपने पास क्या रखा था? शेयर रखा या मनी रखा? एंटिसिपेट कर रहे थे कि शेयर का प्राइस कम होगा, तो हमने एंटिसिपेशन में सेल कर दिया. जब वो डिक्रीज हो गया प्राइस, तो फिर से हमने बाई कर लिया. तो जब शेयर का प्राइस चेंज हो रहा था, इन दैट पीरियड वी वर नॉट होल्डिंग शेयर बट वी आर कीपिंग मनी. So that is money demanded for speculative purpose. अगर नहीं रखते मनी तो क्या होता? कैपिटल लॉस हो जाता. आप एंटिसिपेट कर रहे थे शेयर का प्राइस कम होगा, फिर भी हमने शेयर रखा हुआ है, जब सेल करेंगे तो देयर विल बी कैपिटल लॉस. तो हाउ वी कैन अवॉइड कैपिटल लॉस? बाय कीपिंग मनी. तो मनी इज हेल्ड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस. तो समटाइम्स जब हम कहते हैं लैक ऑफ डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन तो है बट लैक ऑफ डिमांड है, तो उसे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्शन तो हुआ है, इनकम जनरेट हुई है, बट फिर भी लैक ऑफ डिमांड है. लैक ऑफ डिमांड है क्योंकि स्पेकुलेटिव पर्पस है हमारा. वी आर एंटिसिपेटिंग समथिंग. लाइक फॉर एग्जांपल कोविड, आफ्टर कोविड ग्रोथ रेट वाज लो, बट व्हाई इट वाज लो? कैपिटल, लेबर, सब कुछ तो वैसे ही थे. तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? वी डेफर्ड आवर स्पेंडिंग. बट व्हाई वी डेफर्ड आवर स्पेंडिंग? We were speculating, anticipating that in future there could be lack of income, so still prefer to hold that income. So Keynesian argument say that money is demanded for two purpose: medium of exchange and store of value. Therefore money is demanded for transaction and speculation. A classical में money perform only one role, that is to act as medium of exchange, and money is demanded only for transaction purpose. जब आप इसको इलेबोरेट करेंगे तो रिमेंबर डिफरेंस क्लासिकल और केनीशियन के हर जगह है, पूरी मैक्रो में चलती रहेगी डिफरेंस. तो फर्स्ट डिफरेंस आई स्टेटेड, इट इज बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज. केनीशियन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिजिडिटी. क्लासिकल में आउटपुट डिटरमाइंड बाय कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी. इन केनीशियन आउटपुट डिटरमाइंड बाय डिमांड. क्लासिकल इज लॉन्ग रन डिस्क्रिप्शन, केनीशियन इज short run description. Classical believed in Say's law. Keynes do not agree with that law. Classical says money is medium of exchange, so money is demanded only for transaction. According to Keynes, money is demanded for transaction as well as because money also performs the role of store of. Then the other difference between classical and Keynesian is that in classical model it is basically referred as the supply side economics. Classical model is supply side economics. Supply side economics means output of economy, output means Y, will be determined from supply side, which means supply curve will be vertical. Okay, we will derive this supply curve today itself, why it is vertical. So if supply curve is vertical, then no matter wherever you will draw the demand curve, the output will remain. Demand अब आप यहाँ draw कर लो, over draw कर लो, anywhere, output will remain. So output is always constant at full employment output, because labor market में हमेशा full employment है. So here output will get determined by supply. Output get determined by supply. Demand will have a role to play, but only in determining what? Price. Demand will play the role in determining price. So if demand curve will shift, only price will rise. Only price will rise. Whenever demand curve will shift, only price will increase. What is the role of AD in classical model? If I say what is the role of AD in classical model?
The role of AD in classical model is to determine price. And what is the role of AS? The role of AS in classical model is to determine output. एक आउटपुट डिटरमाइन कर रहा है और एक प्राइस डिटरमाइन कर रहा है. बट Keynesian model is in fact a demand side model. They emphasize on demand more. Keynesian model में aggregate supply की लाइन हॉरिजॉन्टल है. So what is the role of aggregate demand here? If AD is placed here, output will be Y1. If aggregate demand increases, in response of more demand, economy will produce more of output. Now question is, why economy is able to produce more of output here? यहाँ पे output increase क्यों हो रहा है? Because classic Keynes ने assume कर रखा unemployment है. So if there will be more demand, in response of more demand, they will produce more of output. And they can produce more of output because labor was already unemployed, so they can hire more labor to produce more of output. और यहाँ पे ये क्यों possible नहीं है? Already full employment है. If already labor is fully employed, we cannot produce more than that output. So classical model में it is a supply side model. Keynesian model is basically a demand side model. Classical or Keynesian में if you continue, because there are many differences between the classical and the Keynesian approach. This classical side also believed in classical dichotomy. Classicals believed in classical dichotomy. Dichotomy means separation. Classical dichotomy means separation between nominal variable and real variable. Classical dichotomy means separation between real and nominal variable. Real and nominal variable. So nominal variables are different, real variables are different. What are nominal variables? कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं. नॉमिनल वेज, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, nominal interest rate, real like real GDP, real wage, real exchange rate, real interest rate. What is the difference between fundamental difference between nominal and real? Nominal is always expressed in monetary term. Real is always expressed in physical term. Nominal explained in monetary term, real explained in physical term. Like if I say wage is 100 rupees per hour, 100 rupees per hour है, that is nominal. What is real? How much goods you can buy with that 100 rupees, that is real. But how much goods I can buy in 100 rupees, that depend upon the price. If price of goods is 100, then you can buy 1 unit. If price is 50, then you can buy 2 unit. So if I divide that wage with price, it will become real. That will become real. क्लासिकल कंसेप्ट कह रहा है कि इन दोनों में सेपरेशन है. चेंज इन नॉमिनल विल नॉट अफेक्ट रियल. रियल से डिटरमाइन होगा, नॉमिनल से होगा. नॉमिनल की वजह से रियल चेंज नहीं होगा. तो किसी भी नॉमिनल नंबर को, जैसे अगर मनी लिखा है तो ये नॉमिनल मनी है, इस नॉमिनल मनी को प्राइस से डिवाइड करेंगे तो रियल मनी हो जाएगा. नॉमिनल डिवाइडेड बाय प्राइस विल बिकम रियल and real multiplied by price will become nominal. But change in nominal will not affect any real number. ठीक है, तो ये पॉइंट अभी एक्सप्लेन करना आपको, क्लासिकल डायकोटमी का मतलब क्या है. And the second other point is that money in classical model is said to be neutral. Neutrality of money. Money is neutral means money being a nominal variable will not affect any real variable.
Change in money will not affect real GDP. Change in money will not affect real wage. Change in money will not affect real money supply. So money is neutral in that sense. So classical dichotomy and monetary neutrality ये दो core assumption है classical model के. Keynes do not agree with that. Keynes के concept में money neutral नहीं है. Money can affect real variable in Keynesian model. So if money can affect real variable, that means there is no such dichotomy between real and nominal in the Keynesian description. ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं बिटवीन द क्लासिकल मॉडल एंड द केनेशियन मॉडल. तो आप आंसर के फॉर्मेट में व्हेन दिस क्वेश्चन वाज देयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड द केनेशियन मॉडल, इस क्वेश्चन को अगर आप आंसर करेंगे तो वन वे इज आल्सो दिस टेबुलर फॉर्म, वो भी कर सकते हैं, बट इट विल बी बेटर इफ यू टेक वन पॉइंट एंड राइट वन पैराग्राफ, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पैराग्राफ एंड सो ऑन. So just write down a description. This was question, I think compulsory question था, about 150 words का आपको आंसर लिखना है. Read and first. Classical economics assume that there is always full employment in labor market. There is always full employment in labor market. There is always full employment in labor market. It means labor demand is always equal to labor supply. Labor demand is always equal to labor supply. So full employment is guaranteed. Full employment is guaranteed. Full employment is guaranteed by flexibility of wage. Full employment is guaranteed by flexibility of wage. Is guaranteed by flexibility of wage. Underline that term. Flexibility of wage. On the other hand, Keynesian economics, assume that there is unemployment in labor market. There is unemployment in labor market. Due to rigidity of wage. Due to rigidity of wage. Due to rigidity of wage. Underline that term, with rigidity of wage. So wages could be rigid due to. Wages could be rigid due to. Wages could be rigid due to. Presence of minimum wage law. Presence of minimum wage law. From a presence of labor union, etc. Next paragraph. Therefore, in Keynesian economics, there could be involuntary unemployment.
involuntary unemployment, underline that term, involuntary unemployment. But in classical model, there will be only frictional or voluntary unemployment. There will be only frictional or voluntary unemployment. Frictional or voluntary unemployment. Next paragraph. Classical economics provides long run description of economy, provides long run description of economy, where output of economy is determined by stock of capital, labor force, technology, etc. Just function लिख देगा वहां पे, y as a function of k comma l, y as a function of k comma l. In contrast, Keynesian economics provides short-run description of economy, where output is determined by aggregate demand. Output is determined by aggregate demand, y equal to AD. Next paragraph. Classical economics is based on Say's law. Classical economics is based on Say's law. Underline the term, Say's law, which states that supply creates its own demand. Supply creates its own demand. Okay, वहाँ elaborate नहीं करना, because 10 marker में you have limited space. बट वो टर्म आना चाहिए आपके पास, supply creates its own demand. However, Keynes do not agree with that concept. Keynes do not agree with that concept that supply creates its own demand. Simply Keynes is rejecting the Say's law. Supply creates its own demand. Next paragraph. In classical model, money is demanded. In classical model, money is demanded only for transaction purpose. Money is demanded only for transaction purpose. Money is demanded only for transaction purpose, because
they believe that, because they believe that money performs only one function, money performs only one function, money performs only one function, that is to act as medium of exchange. That is to act as medium of exchange. That is to act as medium of exchange. However, in Keynesian model, money is also demanded for. Money is also demanded for speculative purpose. Money is also demanded for speculative purpose. Also demanded for speculative purpose. As money also perform the role of store of value. Money also perform the role of store of value. Next paragraph. Classical economics focuses on supply side, and they argue that output of economy is determined from supply side only. The supply determine nature of output. The role of aggregate demand is only to determine price. The role of aggregate demand is only to determine price. In contrast, in the Keynesian model, role of aggregate demand is to determine output. Role of aggregate demand is to determine output. Role of aggregate demand is to determine output. इस पॉइंट को आप ध्यान देना, ये जब आप पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो केनिशियन मॉडल कह रहे हैं कि आउटपुट कैन इंक्रीज. इफ यू इंक्रीज डिमांड, आउटपुट कैन इंक्रीज, बट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू टू राइज. केन्स भी ये कह रहा है कि इट विल कंटिन्यू टू राइज, बट इट विल कंटिन्यू टू राइज ओनली टिल फुल एम्प्लॉयमेंट. वंस यू रीच द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, देन सप्लाई का विल बिकम वर्टिकल. ये नहीं करेंगे क्लासिकल गलत है, और सिर्फ ये कह रहा है कि उस पॉइंट पे हम नहीं है. वी आर नॉट ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, वी आर ऑपरेटिंग बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, so you can increase the output. Basically right now you are writing two extreme points, either vertical area or horizontal area. The new classical will say neither it is vertical nor it is horizontal, it is positively so. We will synthesize between these two. Next paragraph में classical economics is based on classical dichotomy. Underline the term classical dichotomy.
which means there is a theoretical separation between, which means there is a theoretical separation between nominal variables like nominal wage, nominal money, nominal GDP, and real variables like real wage, real money, and real GDP. This dichotomy arises due to monetary neutrality. This dichotomy arises due to monetary neutrality. Underline that term, monetary neutrality, which means money being a nominal variable, money being a nominal variable will not affect any real variable, So, however, Keynes do not agree with that concept. And according to him, change in money can affect real variables. Change in money can affect real variables. ठीक है, इसलिए पॉलिसी इंप्लीकेशन भी दोनों के अलग होते हैं. पॉलिसी इंप्लीकेशन में in classical model we will simply believe that neither fiscal policy nor monetary policy, दोनों में से कोई भी पॉलिसी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज इकोनॉमी का आउटपुट किससे गवर्न हो रहा है? वाई किसका फंक्शन है? के का फंक्शन है, लेबर का फंक्शन है, टेक्नोलॉजी का फंक्शन है. इट इज नॉट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ मनी. तो फिर वो मनी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा. बट वाई इट विल नॉट चेंज, वी विल इलैबोरेट व्हेन वी स्टडी द क्लासिकल मॉडल. और केन्स के कंसेप्ट में वाई किससे डिटरमाइन हो रहा है? और एडी के कंपोनेंट के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली आ गया, तो फिस्कल पॉलिसी तो इफेक्टिव होगी वहां पे. मॉनेटरी भी इफेक्टिव होगी, बिकॉज मॉनेटरी विल एक्चुअली इफेक्ट द इन्वेस्टमेंट. पॉलिसी इंप्लीकेशन एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो आप. इसलिए जो क्लासिकल कंसेप्ट है, जितने भी ओल्ड कंसेप्ट है, उनका आर्गुमेंट बेसिकली दे फॉलो द लेजर्स फेयर पॉलिसी. व्हाट इज लेजर्स फेयर पॉलिसी? लीस्ट इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बिकॉज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का इफेक्ट नहीं होना है. व्हाट इज द नीड फॉर गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन द इकोनॉमी? Because government fiscal policy and monetary policy according to them is not useful. If it is not useful, there is no need for government to interfere. Market is efficient, market efficiently function कर रहा है. But Keynes is not agreeing with that concept. Policy implication का एक point ऐड कर लो. In terms of policy implication, neither fiscal policy nor monetary policy will be effective in
will be effective in changing the output, will be effective in changing the output. But in Keynesian model, but in the Keynesian model, both fiscal policy and monetary policy, both fiscal policy and monetary policy will be effective to change the output, will be effective to change the output. Okay, so whenever you read the classical concept, तो क्लासिकल थॉट एक जगह आनी चाहिए आपके पास. When we are studying the classical model, माइंड में होना चाहिए कि क्लासिकल मॉडल में फुल एम्प्लॉयमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज है, आउटपुट डिटरमाइन फ्रॉम सप्लाई साइड होना है, मनी विल एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस, देयर विल बी क्लासिकल डायकोटमी, aggregate supply line will be vertical, there will be neutrality of money, of fiscal and monetary policy will not be effective. And in the Keynesian, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, वेज की रिजिडिटी होगी, आउटपुट डिटरमाइन फ्रॉम डिमांड साइड होगा, मनी विल बी डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन प्लस स्पेकुलेशन, मनी विल परफॉर्म द रोल ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी बोथ विल वर्क एंड सेज लॉ विल नॉट ऑपरेट, दैट इज सप्लाई विल गेट इट्स ओन डिमांड. व्हेन यू आर आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चन में दैट क्वेश्चन है बट 10 मार्कर में यू हैव ओनली 2 साइड, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा. यू हैव एक्चुअली रिटन आई थिंक मोर देन 150 वर्ड्स, बट इफ यू राइट इन दिस मैनर, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट क्वेश्चन, बिल्कुल अगर आपको याद हो ऐसे आंसर जो वर्ड्स लिखे गए हैं, देन एक्सपेक्ट के 6 या 7 आउट ऑफ 10 मिल जाता है. यूजुअली स्कोर गुड इफ यू, इवन इफ यू राइट अ बेटर आंसर, गुड आंसर, इवन इफ दे आर सेटिस्फाइड. जो मार्किंग स्कीम है वो ये है कि 50-55% ही मिलता है, बट इन सम क्वेश्चन यू कैन इंक्रीज लाइक दिस, ऐसे क्वेश्चन में मिल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वहां जो स्पेस होता है उसका ध्यान रखिएगा. कंपल्सरी क्वेश्चन में क्वेश्चन विल बी प्रिंटेड एंड यू हैव ओनली 2 साइड्स, ठीक है, उससे साइड में लिखना है, प्लस कंप्लीट जितना स्पेस आपके रजिस्टर में भी है उतना स्पेस नहीं होता वहाँ. लाइक कोई कंटेंट या आंसर आप लिख रहे हैं तो उसमें स्पेस आपके पास ये रहता है, ठीक है, ये दोनों साइड भी मार्जिन रह जाएंगे. यू विल हैव बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्पेस, जस्ट 2 साइड मिलेंगे 10 मार्कर के लिए, और 15 अगेन यू आर गेटिंग मोर स्पेस, ठीक है. इस फॉर्मेट में बेसिकली आंसर लिखना है. रेफर इन द शॉर्ट पैराग्राफ फॉर्मेट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, और जो की वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन हो जाए चाहिए. Now start, we are doing first of all the classical concept. So source for this classical model, see, when you study the classical macroeconomics model, जब ये वर्ड यूज करेंगे तो रिमेंबर क्लासिकल मैक्रो में इनफैक्ट देयर आर 3 टूल्स. One will be classical aggregate supply curve, second will be classical aggregate demand, and third tool of classical model is loanable fund theory of interest, loanable fund theory of interest. So classical model, classical AS, classical AD, and loanable fund theory of rate of interest. So there are 3 important parts. Once you know all 3, then we can explain the classical model. So we will start one by one. First we will derive classical AS today, next we will be deriving classical AD, then we will derive loanable fund, and then we will explain the policy implication. And the source for this
will be mainly chapter number 3 Freud. For these two it is chapter number 4 Freud. In fact, if you just read these two chapters 3 and 4 from Freud, classical model के जितने भी question you can attempt, whether it is for the optional or economic service. Classical model, all question can be attempted but just by referring these two chapters. So the source is basically Freud, chapter number 3 and chapter number 4. So in this class we are starting first with chapter number 3. ठीक है, यहाँ से begin करना है. But again I repeat, when I use the word classical model, model has 3 tools: classical AS, ADN, loanable fund. By applying all you will answer. So first is on the classical, chapter number 3 basically we are starting with, or classical model के लिए. This chapter number 3. चैप्टर के बिगिनिंग में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इट इज मे बी रेलिवेंट, लाइक बिफोर क्लासिकल. क्लासिकल से पहले की इकोनॉमिक्स क्या थी, वो इकोनॉमिक थॉट में आप इकोनॉमिक सर्विस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ याद रखेंगे बिफोर द क्लासिकल इट वाज मर्केंटलिस्ट. उससे भी पहले फिजियोक्रेट्स थे. ठीक है, तो वो डिटेल आप सेपरेट कंसेप्ट के लिखे, बट हियर वी आर लिमिटिंग टू द क्लासिकल पार्ट. बट सिंस क्लासिकल जस्ट बिफोर द क्लासिकल व्हाट वाज देयर, वो रेलिवेंट हो गया. Just before the classical it was mercantilism. So mercantilism, the main idea of mercantilism was Booleanism, which means the strength and power of a country is determined by the stock of precious metals that country will have. कंट्री के पास अगर प्रीशियस मेटल्स ज्यादा हैं, then that country will be supposed to be more powerful. The mercantilist thought about that. You can create wealth by accumulating more precious metals, but question is how we can accumulate more precious metals. You can accumulate more precious metals by exporting more and putting restriction on import, because through export you will get that precious metals. It was happening in that form. We can apply more restriction on import and allow more and more export. So country's strength was determined by the stock of precious metals. Classical concept ने इसको बदल रखा है. Classical concept कह रहा है कि economy's strength and power will be determined by the real factors, not by the stock of metals. It is not determined by the stock of metals, it is determined by the real factors. Real factors like how much you can produce, how much is the GDP, why US is supposed to be powerful, not because of the stock of metals, mainly because of its larger GDP. Economy is able to produce more, but why US is able to produce more as compared to other countries? Capital stock is one reason, other टेक्नोलॉजी. तो जो भी पॉइंट्स आप कह रहे हैं वो बेसिकली किसकी तरफ ले जा रहा है, आपको क्लासिकल की तरफ तो ले जा रहा है. मोर स्टॉक ऑफ कैपिटल है, मोर प्लांट एंड मशीनरी है, बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट. So the focus basically shifted from Booleanism to real factors. Classical analysis is real analysis. They focus on the real factors, real GDP, real money supply and so on. So just write an introductory part for that. Then we'll start with the classical derivation of classical AS. So just before the classical it was, so basically classical replaced, the classical thought basically replaced mercantilists, and the mercantilists actually replaced the physiocrats. ठीक है, what is development है वो इकोनॉमिक थॉट में अलग करते हैं. आप पार्ट में लिखिए पहले. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इमर्ज्ड एज classical economics emerged as classical economics emerged as a revolution against classical economics emerged as a revolution against a body of economic principle or economic doctrine, body of economic principle known as mercantilism.
known as mercantilism. The features of mercantilism were features of mercantilism were a Booleanism, that is a belief that wealth and power of a country are determined by its stock of precious metals. Is determined by its stock of precious metals. B. The belief in the need for state action. State action means government action. The belief in need for state action to direct development of capitalist system. To direct the development of capitalist system. Next paragraph. In contrast to mercantilist, classical economists emphasized. In contrast to mercantilist, classical economists emphasize the importance of real factors. Emphasize the importance of real factors. Underline that, real factors. In determining the wealth of country. In determining the wealth of the country. And they stress the optimizing tendency of free market, मतलब competitive market. They stress the optimizing tendency of free market in the absence of state control. They stress the optimizing tendency of free market in the absence of state control. क्लासिकल कंसेप्ट कह रहा है कि जो मार्केट है वो एफिशिएंट है, नो नीड टू रेगुलेट इट, कंट्रोल इट. मर्केंटिलिस्ट में गवर्नमेंट का एक्शन रिक्वायर्ड है टू क्रिएट दैट वेल्थ. क्लासिकल में गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नॉट नीडेड, मार्केट इटसेल्फ इज एफिशिएंट. नेक्स्ट पे आप classical analysis was primarily real analysis. The growth of an economy was the result of increased stock of factors of production, and advances in technology. Increased stock of factors of production and advances in technology. So, according to classical, money played a role
money played a role only in money played a role only in helping transactions. Money played a role only in helping transactions. After comma it means money only act as medium of exchange. Money only act as medium of exchange. Next paragraph. Both the aspect of classical economics, both these aspect of classical economics that is stress on real factor, stress on real factor and effectiveness of free market and effectiveness of free market mechanism, effectiveness of free market mechanism developed in the course of controversy over developed in the course of controversy over course of controversy over long run question concerning long run question concerning determinants of economic development, determinants of economic development, what causes economic development actually. To explain that they emphasize on the real factors, determinants of economic development. Classicals believe that free market mechanism would work. Classicals believe that free market mechanism would work free market mechanism would work and it would provide market for it would provide market for it would provide market for any good that were produced, market for any good that were produced, it will provide market for any good that were produced, ब्रैकेट में से लो. ये चैप्टर के स्टार्ट के जो फ्यू पेजेस है उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन है. अब इस फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है क्लासिकल एएस को डिराइव करना है एंड टू डिराइव द क्लासिकल एएस हमारा एंड ऑब्जेक्टिव ये रखिएगा, वी विल डिराइव क्लासिकल एएस ऑन एक्सेस यूलाइट पी एंड वाई. फाइनली आउटकम ये आएगा, अभी ड्रॉ नहीं करना इसको, विल डिराइव इट बट जस्ट सी व्हाट आर द वेरिएबल्स रिटन ऑन द एक्सेस. प्राइस है और आउटपुट है. आउट ऑफ दीज टू विच वन इज रियल एंड विच वन इज नॉमिनल. प्राइस मॉनेटरी हो जाएगा वो नॉमिनल है और वाई आउटपुट रियल हो गया. और क्लासिकल डायकोटमी क्या कहता है, नॉमिनल चेंज होने पे रियल पे फर्क नहीं पड़ता. तो नॉमिनल क्या है यहाँ पे, प्राइस है. दैट मीन्स प्राइस अगर हम P1 लेंगे तो भी आउटपुट वही रहेगा, प्राइस अगर P2 लेते हैं तो भी आउटपुट वही रहेगा. प्राइस चेंज होने पे आउटपुट पे फर्क, बट वी हैव टू डिराइव इट. हाउ वी गेट दिस वर्टिकल लाइन, एक्सप्लेन करने के लिए योर फर्स्ट टूल विल बी प्रोडक्शन फंक्शन. बुक में भी ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स गिवन है, शॉर्ट सब हेडिंग्स. तो स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्शन फंक्शन. When I say production function, production means this output which is a function of capital, we are assuming it to be constant, and employment of labor, write down n. n से employment को denote करते हैं, based upon a constant technology also. अब कुछ ग्राफिकल टूल समझिएगा. when you draw any diagram in this equation, how many variables are written, एक y है, k है और n है. डायग्राम ड्रॉ करते समय हमने 2 डायमेंशन लिया,
एक डायमेंशन पे n मार्क कर दिया, दूसरे डायमेंशन पे y ले लिया, व्हाट अबाउट द थर्ड? कांस्टेंट कर लिया उसको। जब कभी आप इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, तो इक्वेशन के अंदर कई वेरिएबल हो सकते हैं, और ग्राफ बनाते समय देखना है कि क्या हमने एक्सेस पे लिखा है, एक्सेस पे जो टर्म नहीं लिखा उसको हमने क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया। सो व्हाट वी आर कीपिंग कांस्टेंट? कैपिटल। व्हाट वी आर कीपिंग कांस्टेंट? टेक्नोलॉजी। तो एक कांस्टेंट टेक्नोलॉजी पे और कांस्टेंट कैपिटल स्टॉक पे यू आर ड्राइंग द फंक्शन। So as employment will rise, output will increase. Now we are studying macroeconomics. अगर ये माइक्रोइकोनॉमिक्स होता तो वहां पे कहते हैं कि कीपिंग कैपिटल कांस्टेंट, इफ यू इंक्रीज लेबर then initially total product will increase at increasing rate, then it will increase at decreasing rate, and finally total product start declining. But that happens for one firm. Here we are studying the macroeconomics as a whole. ये पॉसिबल है कि फॉर वन फर्म इट इज इंक्रीजिंग, फॉर द अदर फर्म इट इज, देयर कुड बी कांस्टेंट रिटर्न आल्सो। कांस्टेंट का मतलब हो गया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने टू सम एक्सटेंट, देन इट कुड बी डिमिनिशिंग। So this is basically a function y as a function of capital constant employment of labor. Now this line simply show that if employment of labor will be N1, then output produced by that labor will be Y1. If employment is N2, then output produced by that labor will be Y2 and so on. So what does this function explain? ये कर्व क्या शो कर रहा है? Relation between output and labor, keeping capital and technology. तो जिससे हमने कांस्टेंट माना, अगर वो चेंज हो गया तो, अगर कैपिटल चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? इफ टेक्नोलॉजी कैन चेंज, देन सेम लेबर कैन प्रोड्यूस more of output. If you give better capital to the labor, same labor can produce, so this function can shift. अभी shift नहीं करना, but this function can shift. And when it will shift, capital change हो, technology change हो, productivity change हो जाए, skill change हो जाए worker का, same labor can produce more of output. From this function, you actually derive marginal productivity of labor. What is the meaning of the term marginal product? Marginal means additional. So marginal product of labor means additional output due to additional employment. Or whenever you use this type of description, delta y upon delta x, ये delta y by delta x हो गया, that will always give you slope. So what is slope of function? Slope of function is, तो जब तक ये लाइन स्ट्रेट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, सो यू कैन ड्रॉ horizontal line, and the slope is declining, so it will be negatively sloped. So just draw a line MPN, but you have derived this MPN from which curve? अगर फंक्शन शिफ्ट हुआ तो, फंक्शन शिफ्ट हो गया तो ये कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट हम कहां से डिराइव करते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन से, गिवन प्रोडक्शन फंक्शन से। अगर फंक्शन विल चेंज, देन दिस कर्व विल आल्सो चेंज। जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट, लेटर ऑन यूज करेंगे। तो स्टार्ट में कुछ टूल बताए जा रहे हैं जो पेपर में रिक्वायर्ड नहीं होंगे आपको लिखने के लिए, बट नोटबुक में आपको लिखना है, बिकॉज योर पर्पस इज टू स्टडी द क्लासिकल मॉडल। मॉडल को समझने के लिए हम कुछ टूल बना रहे हैं, समझने के लिए। तो वन टूल इज प्रोडक्शन फंक्शन, बिकॉज क्लासिकल में हमने क्या लिखा है? y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। केस में लिखेंगे y इक्वल टू AD, बट यहाँ तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। Just write down few basic points here. Production function summarizes. Production function summarizes. Production function summarizes the relationship between. Production function summarizes the relationship between total input and total output.
Production function summarizes the relationship between total input and total output. Total input and total output. After comma, assuming a given technology. Assuming a given technology. So the short run production function. The short run production function. Short run production function is a technical relationship. Short run production function is a technical relationship that determines the level of output, after comma, given the labor input. So from production function, we can derive marginal productivity of labor curve. From production function, we can derive marginal productivity of labor curve. We must note that production function can shift up. Due to improvement in technology. Production function can shift up due to improvement in technology or increase in capital stock. Or improvement in productivity of worker. Just remember, when we draw the production function will determine how much output will be produced corresponding to how much employment. तो ये सिर्फ एक रिलेशनशिप है y और n का. How much will be the actual output? ये तो रिलेशनशिप है, y1 y2 y3 could be anywhere. How much will be the actual output? That depend upon employment. Syllabus की heading है theory of employment. We have to determine employment first. Employment will determine output. What determine the employment? Employment can be N1, it can be N2. मार्केट में एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन कहाँ पे होगा? लेबर मार्केट में. तो लेबर, this N will determine the Y, but labor employment will be determined by two things. One is demand for labor, other is supply of labor. So who demands labor? How much labor they will demand? Labor is demanded by firms. How much labor they will demand? They will demand that much of labor so that their own profit get maximized. And what is profit maximizing condition? MR equal to MC. So we have to apply that concept. Labor will be demanded by firm. And firm will always demand that much of labor so that their own profit get maximized. When I said labor is demanded by firms, that firm belongs to a competitive market. बिकॉज हमने क्लासिकल मॉडल में मान रखा है मार्केट फ्री है. तो कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक फीचर और भी है, मार्केट का जो प्राइस होगा दैट प्राइस विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द फर्म्स. फर्म्स आर प्राइस टेकर, प्राइस और एमआर की वैल्यू भी बराबर हो जाएगी. तो फर्स्ट वी हैव टू एक्सप्लेन द लेबर डिमांड साइड, देन वी एक्सप्लेन द लेबर सप्लाई साइड. हु विल सप्लाई लेबर? इकोनॉमी में हु सप्लाइज लेबर? हाउस होल्ड. हाउ मच लेबर दे विल सप्लाई? जैसे फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है वैसे वर्कर अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा.
So they will supply that much of labor so that their own utility get, but they get utility from, they get utility from their income, also from leisure that is not working. So there is a preference between income and leisure. First we have to focus on labor demand, then we will explain labor, then we explain the equilibrium in the labor market. और हमने स्टार्ट में assumption लिख रखा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना है. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई हमेशा इक्वल होंगे, वो हमने एज्यूम कर रखा है. एंड अगर इक्वल नहीं हुए तो हाउ देयर इक्वालिटी इज डिटरमाइंड ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज. अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो वेज चेंज हो जाएगा, और तब तक चेंज होते रहेंगे जब तक वो इक्वल नहीं हो जाते. स्ट्रक्चर क्लियर हो, किस ऑर्डर में आप प्रोसीड करें. फर्स्ट हमने फंक्शन लिखा है. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन एम्प्लॉयमेंट. To determine employment we need labor demand and labor supply. So first we explain labor demand, then we explain labor supply, then we explain labor employment, then we will determine the output. So now study about the labor market. In labor market, first of all, demand for labor. Demand for labor. First understand this point, then you will write. First thing is that labor will be demanded by firm, and firm will demand that much of labor where their own profit get maximized. Profit maximization require that they must produce that much of output where MR is equal to MC. Since this firm belongs to a competitive market, तो large number of firms है, firm का price पे कोई control, तो firm act as a price taker. That is why this marginal revenue is equal to price. तो हमने MR की जगह क्या लिखा, price. Now question is, what is marginal cost? What is marginal cost here? ध्यान देना जरा. Function is written as y as a function of capital comma employment, where capital is marginal cost का मतलब होता है addition to total cost due to additional quantity produced. Now how we can produce additional quantity? You can produce additional quantity only by changing employment. Capital तो constant है, कैपिटल का कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा. यू कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट ओनली बाय एम्प्लॉइंग मोर लेबर. तो हाउ मच आउटपुट वन लेबर विल प्रोड्यूस. एक एग्जांपल दे रहा हूं, सही हो जाएगा. सपोज इफ आई से दैट वेज रेट इज 100 per hour, that means if you employ one labor for an hour you have to pay. If I say that in 1 hour labor produces 4 units, in 1 hour labor can produce 4, labor can produce 2, labor can produce more than 4. Whatever quantity that labor will produce in that single hour, that will be called as the marginal product of labor. एक घंटे में जितनी क्वांटिटी लेबर प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. तो इफ आई से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 4, इट मींस व्हाट. ध्यान से समझिएगा एग्जांपल. यू हैव एम्प्लॉयड लेबर फॉर 1 hour, you are paying 100 rupees to that worker. In that 1 hour labor has produced, so how much is the increment to cost for 4 units? 100 rupees the increment to cost for 4 units. So how much is for 1 unit? 25 हो गया. मतलब वेज डिवाइडेड बाय एमपीएन हो गया, और 1 यूनिट का जो कॉस्ट होगा वही क्या कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा. अगर एमपीएन की वैल्यू 4 की जगह 2, that means there will be addition to cost by 100 for 2 unit. For 1 unit it will be 50. So in place of MC what you can write, wage upon MPN. तो मार्जिनल कॉस्ट की जगह मैंने क्या लिखा, वेज अपॉन MPN. क्लियर है. ये एग्जांपल आप ऐसे रफ में लिखो सो दैट पढ़ते समय यू कैन रिलेट इट. मार्जिनल कॉस्ट इज वेज डिवाइडेड बाय MPN. दिस इज द कंडीशन फॉर profit maximization. Now you can write this condition as W upon P is equal to what,
marginal productivity of labor, or you can also write the same condition as W equal to price into marginal product of labor. और जब कभी किसी टर्म को हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है, तो प्राइस इंटू मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. इक्वेशन याद रखिएगा, दो तरीके से लिख रहे हैं, one in this form, other in this form. What is the difference between these two? What is W by P? W by P प्राइस से डिवाइड कर दिया, प्राइस से डिवाइड कर दिया तो रियल हो गया. So when profit of firm will get maximized? Profit of firm will get maximized when firm will employ that much of labor where marginal product of labor becomes equal to real wage. Alternately, what we can say, profit of firm will get maximized when value of marginal product of labor becomes equal to nominal wage. This is nominal wage. इसलिए बीएमपी कर्व को या मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व को लेबर का डिमांड कर्व कहा जाता है. तो यू कैन ड्रॉ द लेबर डिमांड कर्व एज दिस. हमने लेबर का डिमांड कर्व ये ड्रॉ कर रखा है. लेबर डिमांड कर्व इज एमपीएन. MPN. So if I say that wage rate is this number, suppose I mark wage as W1 by P1 here, तो प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन ये, it will maximize only at this point. So at that point demand for labor will be N1. If wage is lower, then demand for labor will be more, 2. So actually this curve, MPN curve itself is called labor demand curve. ये लेबर डिमांड कर्व कहलाता है. MPN कर्व को ही लेबर डिमांड कर्व कहते हैं. MPN curve itself is called labor demand curve. ये सारे डिस्क्रिप्शन का आंसर में कहीं यूज नहीं होना है, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए लिख रहे हैं. बिकॉज सारी चीजें आंसर में तो आनी नहीं है. आंसर में आ गए ये सारे टूल्स हैं जिसको हम लर्न करेंगे टू एक्सप्लेन दिस. विल बी सिंपली यूजिंग इट दैट टर्म. राइट एंड फर्स्ट, लेबर इज डिमांडेड बाय फर्म्स. लेबर इज डिमांडेड बाय फर्म्स. Labor is demanded by firms, and competitive firm will produce that much output. Competitive firm will produce that much output where its own profit get maximized. Its own profit get maximized, which requires that MR is equal to MC. It requires that MR is equal to MC. So in a competitive market, MR is equal to price. And marginal cost of labor is determined by dividing nominal wage with marginal product of labor. Dividing nominal wage with marginal product of labor.
Therefore, we can write profit maximizing condition as, we can write profit maximizing condition as, we can write profit maximizing condition as, ठीक है, यहां तक स्टेट करने के बाद आप कंडीशन को एक जगह लिख लो. वी कैन राइट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन एज, दोबारा से एम आर इक्वल टू एम सी. एम आर की जगह क्या लिखा, प्राइस. मार्जिनल कॉस्ट की जगह लिखा नॉमिनल वेज अपॉन एमपीएन, एंड देन दिस. Thus, the profit maximizing quantity of labor, thus the profit maximizing quantity of labor, profit maximizing quantity of labor demanded by a firm, demanded by a firm is determined by, is determined by equality of, is determined by equality of real wage, equality of real wage and marginal product of labor, real wage and marginal product of labor. That is why marginal product of labor curve is called labor demand curve. That is why marginal product of labor curve is called labor demand curve. It's called a labor demand curve. Clear? So actually जो labor demand का function आप लिखते हैं, this labor demand is a function of real wage. ये रियल वेज का फंक्शन है, बट इट इज एन इनवर्स फंक्शन. बुक वगैरह में यहाँ माइनस साइन लिखा होता है. रियल वेज डिमांड और डिमांड फॉर लेबर वेरीज इनवर्सली विथ रियल वेज, but that is one side of the market. Now move to the second side, which is supply. यहाँ भी पॉइंट समझ लेंगे, बिकॉज अगेन ये डेरिवेशन वगैरह आंसर में नहीं आना, बट रजिस्टर में लिखना है अभी. So labor will be supplied by household or workers. And how much labor they will supply? They will supply that much of labor where their own utility is maximized. They will maximize their own utility. And actually they get utility from two things. They get utility from leisure, that is not working, and they get utility from income, because that income helps them to buy commodities, and through commodity they get utility. But to earn income they have to earn income they have to sacrifice leisure. They prefer leisure, but to earn income they have to sacrifice leisure. तो जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जस्ट कंसीडर दिस, इट विल हेल्प. से एवरी पर्सन इज एंडाउड विथ 24 hour. That time is available to you either for work as well as for leisure. अब जो एक्सेस की मार्किंग है वो मैंने लेजर लिखा है. तो इफ आई टेक कोई भी पॉइंट, इफ आई मार्क एनी पॉइंट हियर, लाइक इफ आई राइट हियर 8, हाउ टू रीड इट? 8 hour for leisure. So remaining 16 for work. If you write here 16, rate 16 hour for leisure, 8 for work. So if I mark 0, then 0 for leisure, which means 24 hour for work.
So if a person is working for all 24 hours, his income will be maximized. And how much income you can get by working 24 hours, that depend upon the wage rate. So if I write here as 2400, it means what? For every hour you get 100 rupees. If I connect these 2 points, 2400 and 24, what is slope of that line? 2400 by 24, that is 100. 100 is the wage rate. Actually line का जो slope है वो wage rate को calculate कर रहा है. A person will neither use all 24 hours for work nor all 24 hours for leisure. He has a certain utility, preference. उस preference को you have denoted by indifference curve. So suppose I draw the indifference curve which is tangent here. Tangency will actually determine how much is the time actually given for leisure. So how much is the time given for leisure? 8. Which means how much is the working hour? So at a wage rate of 100 rupees per hour, how much is the supply of labor? 100 रुपये का वेज रेट हमने लिया है. At 100 rupees वेज रेट you are working how many hour? 16. तो 16 को मैं यहाँ प्लॉट कर दे रहा हूँ. अब राइट साइड हमने एक्सेस पे वेज लिया है और यहाँ पे वर्क ले रहे हैं. You are working for 16 hours at a wage rate of 100 per hour. You get 1 point. Now tell me one thing. If wage rate increases from 100 to 200, then what will be the impact? वेज रेट 100 की जगह 200 मिल रहा है. टाइम तो वही रहेगा 24. अब पूरे 24 आवर अगर वर्क करते हैं देन हाउ मच इनकम यू कैन अर्न? 24 की जगह 4800 हो जाएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे 4800 का ले लिया. 4800 से इसको कनेक्ट कर लेंगे. ये लाइन स्टीपर होगी हमारी. Now when wage rate will increase, what is the effect? Whether worker will work more or less? Actually two effects will occur. दो इफेक्ट होते हैं. एक substitution effect है और एक income effect है. Substitution effect argues that when wage rate is higher, leisure becomes expensive. How and why? Leisure is nothing but opportunity cost of wage rate is nothing but opportunity cost of leisure. 1 घंटे अगर हमने वर्क नहीं किया जब वेज रेट 100 था तो क्या हमने सेक्रीफाइस किया? 100 रुपीज. और अगर 200 हो गया तो आई वाज सैक्रिफाइसिंग 200 रुपीज. So at a higher wage, leisure will become expensive. So person will have less leisure and more work. So due to substitution effect, work will increase. But what is the income effect? High wage rate pay, if you work more, your income goes up. As your income will increase, you will prefer to have more of leisure because leisure is normal good. We prefer more of leisure. And more income, we prefer to have more of leisure. But you can have more of leisure only when you work less. Substitution effect की वजह से वर्क बढ़ना है, इनकम effect की वजह से वर्क कम हो जाएगा. What is the overall effect? आपको it is ambiguous. बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. तो नॉर्मली जब आप सप्लाई का इंडिविजुअल का बनाते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग कर लेते हैं पर्सन के लिए, और वो माइक्रो है. और यहाँ पढ़ रहे हैं हम मैक्रो में, माइक्रो का टूल यूज कर रहे हैं. We are explaining in micro term, but my purpose is to explain it in macro. So we assume here that substitution effect is more than income effect, and therefore work will increase. तो वर्क इंक्रीज करना है तो ऑब्वियसली वर्क को इंक्रीज करना है तो नेक्स्ट टेंजेंसी आप इसके लेफ्ट साइड कहीं भी दिखा देंगे. मैंने लेफ्ट साइड अगर यहाँ कहीं मार्क कर लिया, सपोज 6 आवर फॉर लेजर तो 18 आवर वर्क के लिए हो जाएगा. तो एट अ हायर वेज रेट यू आर वर्किंग मोर. इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद वी गेट पॉजिटिव स्लोप लेबर सप्लाई का. यहाँ से पॉजिटिव स्लोप लेबर सप्लाई का आ जाएगा. अगेन नोटबुक में इसको रखोगे, अदरवाइज आप इस डिस्क्रिप्शन को भूल जाओगे. यूज नहीं होना क्योंकि आंसर में कहीं अप्लाई नहीं करना है. वी हैव टू जस्ट यूज दिस लेबर सप्लाई का, बट वो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने कहाँ से उसको डिराइव कर रखा है. So we have derived it from the leisure labor constraint line. So now labor supply is also a function of W by P, but it is a positive function. ये positive function है.
At high wage rate in the economy, always you get more worker who are willing to work. So labor supply is positive slope, labor demand is negative slope. इसमें कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फ्रंट में चैप्टर के एंड में आप देखो, इफ आई से दैट पीपल्स प्रेफरेंस चेंजेस इन फेवर ऑफ लेजर, पर्सन का प्रेफरेंस लेजर की तरफ चेंज हो गया, दे प्रेफर टू हैव मोर लेजर नाउ, so how it will affect the labor supply? Preference are changed towards leisure, that means they prefer to have more leisure. If Saturday, Sunday, any weekend should start from Friday. What is the effect of that? Labor supply will shift to the left, क्योंकि किसी भी wage rate पे now they will work less number of hours. If they prefer to work for longer working hours, then labor supply will shift to the right. If labor force participation rate changes in the economy, greater female participation in the workforce, greater female participation in the workforce, which means at same wage rate economy will get more labor, so again labor supply will shift to the right. Clear? So this supply curve can shift to the left or it can shift to the right. Just remember, just write one paragraph here. Labor services are supplied by individual workers. Labor services are supplied by individual workers. So some classical economists assume that individuals attempt to maximize utility. Individuals attempt to maximize utility, and utility depends positively on real income and leisure. Next paragraph. Assuming that substitution effect dominate income effect. Assuming that substitution effect dominate income effect, we get positive slope labor supply curve. We get positive slope labor supply curve. We get positive slope labor supply curve. So now you have derived the labor supply curve and you know labor demand curve. Next paragraph. The classical economists assume that employment of labor is determined by forces of demand and supply. Determined by forces of demand and supply in the labor market. The main feature of classical labor market is that the main feature of classical labor market analysis is the assumption that
मार्केट वर्क्स वेल, मार्केट वर्क्स वेल मतलब मार्केट एफिशिएंट होता है, मार्केट वर्क्स वेल, इट मीन्स firms and individual workers, firms and individual workers optimize their objective, firms and individual workers optimize their objective, optimize their objective, जैसे फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट और हाउस होल्ड का ऑब्जेक्टिव है यूटिलिटी, सो दे ऑप्टिमाइज इट and they have perfect information about, and they have perfect information about, they have perfect information about relevant prices, perfect information about relevant prices. In addition, there are no barriers to adjustment, there are no barriers to adjustment of money wage, there are no barriers to adjustment of money wage, no barrier to adjustment of money wage, and market is always in equilibrium, market is always in equilibrium, मतलब लेबर का डिमांड और लेबर का सप्लाई हमेशा इक्वल रहेगा, तो इक्वल होने पे जो भी वेज आ रहा है दैट विल बी W1/P1, और इसे ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, डिमांड सप्लाई जहां बराबर होगा दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द लेबर मार्केट. So wages cannot be above, wages cannot be lower. If they are, then wage will change. It will change so that labor demand is always equal to labor supply. So this determines actually your employment. यहाँ से employment determine हो गया. Now ये tool जानने के बाद आपके लिए work easy हो जाता है. You know the production function, you know labor supply, you know labor demand. Combine all to explain what determine employment and output. क्लासिकल मॉडल का आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन हो रहा है? क्लासिकल मॉडल का एम्प्लॉयमेंट ये क्लासिकल मॉडल का एम्प्लॉयमेंट है. अब मुझे डिटरमाइन करना है उसका आउटपुट. सो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. ठीक है, मैं बस एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ. In fact, whenever you are answering any classical model question, most probably you will have to draw this set of diagram और इसी ऑर्डर में ड्रॉ करना. फर्स्ट डायग्राम फॉर प्रोडक्शन फंक्शन, सो वाई एन एन लिखेंगे एक्सेस पे. सेकेंड डायग्राम लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई, सो वाई W/P/N. और थर्ड में एग्रीगेट सप्लाई डिराइव होगा. So in that case you will write price and output. पहले एक्सेस की मार्किंग कर लीजिए. ठीक है, 1 by 1. सबसे पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन लिखा था y एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर. क्वेश्चन नंबर 1 उसे यहाँ प्लॉट कर रहे हैं. When you draw the production function, that production function was this. इस तरफ ड्रॉ करना. y as a function of capital and employment of labor. From that function, we derived marginal productivity curve. Marginal productivity curve is the labor demand. So labor demand is a function of W/P. but ये नेगेटिव रिलेशन है, को मार्क करके लिख देंगे ND लेबर डिमांड या MPN. Then we derive labor supply NS.
that labor supply is also a function of W by P, but that is a positive function. Third equation. And what does labor market assume? Labor market classical model assume that labor demand is always equal to labor, और अगर ये इक्वल नहीं होंगे then what will happen? फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो वेज चेंज हो जाएगा. फ्लेक्सिबिलिटी वेज गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट हियर. To determine the first of all intersection point, this is called as full employment of labor. So once employment is determined, full employment of labor will produce full employment output, YF. Full employment also determine this wage, W1 by P1. So if I ask what is the price I have taken right now, P1, and how much is the output, YF. तो YF के आउटपुट को यहाँ पे कहीं मार्क कर लेंगे. So I mark that YF here and price P1 here. I get 1 point. Clear है? Add price P1, output is YF, because हमने प्राइस P1 लिया है तो P1 कोई नंबर होगा, 5 10 कोई नंबर है, उस नंबर को आप कहीं भी मार्क कर लो, एनीवेयर. YF भी एक नंबर है, दैट नंबर कैन बी मार्क्ड एनीवेयर. Now answer one thing, just if I consider price higher rather than P1, it is P2, what will be the impact here? यहाँ देख के बताना. I consider price higher, I am not taking P1, price is higher, P2 है. As price will rise with a given nominal wage, the real wage will fall. But when you take any real wage lower than that number, like this, lower than that number लेंगे तो वहां पे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, because at that real wage lower than equilibrium, labor supply is less, labor demand is more. Whenever labor demand will be more in the classical model, wage will increase. लेबर का डिमांड ज्यादा है, सो इफ लेबर डिमांड इज मोर देन वेज विल स्टार्ट राइजिंग. और कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक इक्वल नहीं हो जाता, विच मीन्स अगर प्राइस P1 से P2 है तो नॉमिनल वेज मस्ट आल्सो राइज इन द सेम प्रोपोर्शन फ्रॉम W1 टू W2. रियल वेज विल रिमेन सेम, एम्प्लॉयमेंट विल रिमेन सेम. देन if employment will remain same, then output will also remain same. So although price तो increase हो रहा है, but even at that high price, output will remain. फिर से बढ़ाएंगे तो फिर से वही इफेक्ट होना है. So what will be the aggregate supply curve then? You have to simply connect these dots 1 2 3. Once you connect all, you will get a vertical aggregate supply curve. This is derivation of classical AS. ये क्लासिकल एस का डेरिवेशन है. When P1, if we take a higher price, then with the same nominal wage, that is W1, the real wage will fall. But at any real wage lower than W1 by P1, labor market will not be in equilibrium. And if they are not in equilibrium, so classical models say that if they are not equal, then wage will adjust. So actually the nominal wage will start rising due to more demand for labor, and it will continue to rise till you achieve the same point. So if price has gone up from P1 to P2, wage will also rise from W1 to W2 in the same proportion. So that employment will remain same, output will remain same. That is why the line is vertical. So price change will not affect output. Price change से output change नहीं होगा. When you explain the employment determination और output determination, ये आपको लगता है. यूजुअली पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये डेरिवेशन के लिए नहीं पूछेंगे. यार स्ट्रेट क्वेश्चन अगर होगा कि व्हाट कॉजेज डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन क्लासिकल मॉडल, फिर तो यहाँ तक एक्सप्लेन कर देंगे. बट जनरली क्वेश्चन का नेचर समटाइम्स इनडायरेक्ट, समटाइम्स थोड़े अप्लाइड क्वेश्चन भी होंगे. लाइक एक क्वेश्चन में यहाँ पे जस्ट ऐड कर दे रहा हूँ, सी दैट क्वेश्चन.
सिर्फ सोच के बताएंगे कि उसमें आप आंसर क्या करोगे। एक ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, आई थिंक 2017। रीड क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाउ एक टर्म एम्प्लॉयमेंट रियल वेज वुड चेंज इन अ टिपिकल क्लासिकल मॉडल in the event of increase in supply of labor after comma money wage becomes rigid. How एक term employment and real wage, employment or real wage will change in classical model. So using the classical model in the event of increase in supply of labor, मतलब labor supply shifts to the right. So when labor supply will shift to the right, how wage and employment will change in classical model where money wage is, पहली बात, rigidity of money wage is not a feature of classical model, बट क्वेश्चन ने तो मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन ने तो मेंशन कर रखा, तो क्वेश्चन के अगेंस्ट तो जाना नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो मनी वेज रिजिड है, बट वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दी, वो भी हम आते हैं क्लासिकल मॉडल में मनी वेज रिजिड हो गया, मतलब यू आर यूजिंग क्लासिकल मॉडल अकॉर्डिंग टू कनीशन अजम्पशन, मॉडल क्लासिकल है बट अजम्पशन कनीशन आ गया, तो व्हाट विल बी द आउटकम, इस क्वेश्चन के अंदर आउटकम क्या रहेगा फिर, देखो ऐसे क्वेश्चन में भी इसका डिस्क्रिप्शन है, अभी कॉपी नहीं करना, अगर आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखो तो वहां पे आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है कि लेबर डिमांड कब है, लेबर सप्लाई कब है, देयर इक्वालिटी डिटरमाइन द रियल वेज W1 by P1, एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइन, क्लासिकल मॉडल में AS इज वर्टिकल लाइन, AD अभी डिराइव नहीं किया बट व्हेन वी विल डिराइव इट टुमारो यू विल गेट इट नेगेटिव स्लोप, और एग्रीगेट डिमांड सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मनी की वजह से चेंज होगा क्लासिकल मॉडल में, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर। तो दिस इज सपोज P। अब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था, लेबर सप्लाई इंक्रीजेस, so when labor supply will increase you will shift labor supply to the right, so we can shift labor supply curve to the right, what will the outcome, next point of victim कहाँ हुआ, is it no, ये नहीं होगा, because if you consider this point, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे W और P की वैल्यू अलग होगी, क्वेश्चन ने कहा मनी वेज रिजिड है, यू कांट चेंज W, क्लासिकल मॉडल में P कैन चेंज ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, P भी चेंज नहीं होगा W भी चेंज नहीं होगा, P और W दोनों में से कोई वैल्यू चेंज, अगर दोनों ही नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं तो W by P तो सेम रह गया, यू विल ओनली फाइंड अ गैप हियर, which means at the same wage rate supply of labor is more, demand is, supply is more, demand is less, so labor will remain unemployed, but unemployment is not a feature of classical model. Why you are getting a feature of classical model here, why you are getting a feature of Keynesian model here, because केन्स के assumption को फॉलो कर रहे हैं, हमने मनी वेज को रिजिड बना लिया है, रिजिडिटी होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, चाहे मॉडल क्लासिकल पढ़ो या केनीशियन पढ़ो, तो समटाइम्स व्हाट यू हैव टू डू, मॉडल क्लासिकल का है, अदम्पशन केन्स का दे रहे हैं, तो जैसे अदम्पशन लेंगे वैसे आउटकम बदल जाएंगे हमारे, इफ आई गो बाय द केनीशियन अदम्पशन आई विल गेट केनीशियन कंक्लूजन, इफ आई गो बाय क्लासिकल मॉडल आई विल गेट क्लासिकल कंक्लूजन, ठीक है, ये अलग अलग कंसेप्ट बेसिकली डिफरेंट होता है, तो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह, ये तो समझ में आना चाहिए आपको, ये तो कोर है, मतलब बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये से मिल जाएगा, बट ओकेजनली समटाइम्स अगर क्वेश्चन रिलेट करके आ रहा है इवन देन यू कैन
आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यहाँ तक की हेडिंग क्लियर है डायग्राम तक का। विल कंटिन्यू विद द इलैबोरेशन ऑफ दिस टुमारो, विल कंप्लीट द क्लासिकल मॉडल चैप्टर नंबर 3। फिर क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये कहता है कि इफ इट इज अ वर्टिकल लाइन व्हाट कॉजेज एस टू शिफ्ट, किस फैक्टर की वजह से कर्व शिफ्ट हो जाएगा और किस फैक्टर की वजह से कर्व शिफ्ट, दोनों इंपॉर्टेंट रीजन है। व्हाट कॉजेज आउटपुट टू चेंज एंड व्हाट विल नॉट कॉज आउटपुट टू चेंज, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बता सकते हो ये लाइन कब शिफ्ट हो जाती है? हमने पूरे डिस्क्रिप्शन में क्या कॉन्सेंट माना हुआ है? अभी कैपिटल कॉन्सेंट माना है, अगर कैपिटल चेंज हो गया तो कैपिटल चेंज होने पे फंक्शन विल शिफ्ट अप, as function will shift up, labor demand will shift to the right, we will have more labor employed, with more of labor economy will produce more of the output, so this AS will shift to the right. If technology will improve, then also same outcome. If productivity changes, same outcome. Apply करके दिया, what is the effect on employment and output in the classical model due to the Skill India program? What is the impact of Skill India program on this? Apply according to classical model. प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो भी लाइन शिफ्ट हो जाएगा। What is the effect on employment and output if there is increase in the labor force participation rate, female labor force participation? अब लेबर सप्लाई शिफ्ट करोगे सिर्फ। आई विल टेक दोज पॉइंट्स, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है वो पॉइंट कंसिडर करेंगे। फर्स्ट विल एक्सप्लेन द दिस डिस्क्रिप्शन and then two separate heading, what causes output to change and then what causes output not to change. Not to change में कौन से पॉइंट आएंगे? जो भी पॉइंट हमने यहाँ नहीं लिख रखा है, what point we have not written here, major points of macro what we have not written, government expenditure, quantity of money, ये सब नहीं लिख रहा, that means they will not affect output in the classical model. When we study the classical model, remember classical model के अपने 3 important tool हैं, and we are studying the first tool. ये chapter अभी continued है, chapter number 3 का remaining part, and then we will start with the chapter number 4. ठीक है, तो कल ये पहले complete करेंगे, we'll first complete that description, then this, and then we move to this. And once you understood all 3 concepts, classical AS, classical AD, loanable, then you can answer policy implication, fiscal and monetary policy. ठीक है, तो आई थिंक 3 लेक्चर के अंदर बेसिकली क्लासिकल मॉडल में हो जाता है, 3 और 4 मैक्सिमम। तो फ्राइडे और मंडे की क्लास में ये पार्ट हो जाएगा। सोर्स मैंने बता रखा फ्रॉयन है, अगर आपको मैक्रो का स्पायरल मिला या सॉफ्ट कॉपी अपलोडेड है, इफ यू वांट टू रीड इट यू विल गेट द सेम लैंग्वेज, तो फ्यूटाइल टू रिपीट इट फ्रॉम द बुक ऑल्सो। आपके पास नोट्स काफ़ी इलेबोरेटेड आ रहे हैं, प्रेफरेबली आप इसी को दोबारा से आंसर के फॉर्मेट में लिखो, जैसे क्लासिकल कंडीशन डिफरेंस का क्वेश्चन लिखा है। नाउ वेदर यू आर एबल टू राइट इट इन द सेम मैनर और नॉट, वो तभी होगा जब आप एक बार खुद से लिखोगे। ये तो डिक्टेशन लिखा आपने, अब लर्न करके उसको दोबारा से लिखना। लर्न करके अगर आप लिख लोगे अभी, देन सेक्शनल टेस्ट में लिखा, फुल लेंथ टेस्ट में लिखा, दैट मींस सेम क्वेश्चन इफ यू राइट 3 to 4 टाइम्स देन ओनली एक्सपेक्ट दैट यही सेंटेंस आएगा एग्जामिनेशन। अदरवाइज आइडिया आपने समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो समझ तो लिया आपने, बट इफ यू विल नॉट राइट इट, पेपर में जब लिखोगे यू विल यूज योर ओन वर्ड्स, जिसको अवॉइड करना है। ठीक है, यूज इन द सेम मैनर, जैसे फुरान में लिखा हुआ वही लैंग्वेज अगर आए इट विल बी बेटर। कोई बुक अगर रिनाउंड है, प्रोमिनेंट है, देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर इट। वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एनी बुक इज द बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, तो वो प्रेजेंटेशन वहाँ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो लैंग्वेज ऐसे लिखना। प्राइस क्लासिकल मॉडल में चेंज होगा जब एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा, और एग्रीगेट डिमांड तभी चेंज होगा जब मनी चेंज होगी, वो कल क्लियर हो जाएगा। जो क्लासिकल मॉडल का डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें प्राइस चेंज तभी होगा, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आप कह रहे हो ना कि ये डब्ल्यू पी चेंज हो सकता था, बट पी चेंज तभी होगा जब एडी चेंज होगा। एडी डिटरमाइन कर रहा है प्राइस, और एडी तभी चेंज होगा जब मनी चेंज होगा। ठीक है, वो कल क्लियर हो जाएगा। विल कंटिन्यू विद दिस, यहाँ से